Hi friends, welcome to our channel Study Circle Professional. So as you know, this is a continuance of first video जहाँ पे हम SBILL CS Executive SBILL का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में देखा था. आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इजी. क्या पूछा है यहाँ पे? ABC ग्रुप. ABC group is a combination of dairy farmers operating in two states, Maharashtra and Gujarat. They have been operating successfully under separate state cooperative societies for several years. However, due to growing demand for their products and the need to streamline operations across state boundaries, the group is considering the formation of multi-state cooperative societies under Multi-State Cooperative Societies Act 2002. What are the legal and procedural steps involved in registering a multi-state cooperative society under Multi-State Cooperative Societies Act 2002? So यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोसीजर पूछा है एंड इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिखोगे. So see, for the purpose of registering, है ना? So as you can see the answer on your screen. For the purpose of registration of multi-state cooperative society under this act, an application shall be made to central registrar in such form and with such particulars as may be prescribed. The application shall be signed by. अब ये केस टू केस बेसिस पे साइन होता है तो हमारे लिए ऑप्शन सी विल बी द रेलेवेंट ऑप्शन. It should be signed by in case of multi-state cooperative of which another multi-state cooperative society and other cooperative societies are member by duly authorized representative of each of these states, provided that not less than 2 of the cooperative societies referred into this clause shall be such as are not registered in same state. So हमारा एप्लीकेशन ये लोग साइन करेंगे. ठीक है, फिर आगे लिखा है कि जब भी आप एप्लीकेशन दोगे इट शैल बी एक्कम्पनीड बाय 4 कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड बाय लॉज. 4 कॉपीज आपके बाय लॉज की होगी ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पर्सन बाय हुम एंड हुज बिहाफ सच एप्लीकेशन इज मेड शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू सोसाइटी एज सेंट्रल रजिस्ट्रार में रिक्वायर्ड. If the central registrar is satisfied, बच्चों अगर central registrar satisfied हो गया that application complies with provision of this act, that proposed multi-state cooperative societies satisfy the basic criteria that the bylaws provided for social and economic betterment of its members through self-help and mutual aid is in accordance with cooperative principle, that the proposed bylaws are not contrary. I am so sorry. That the proposed bylaws are not contrary to the provision of this act and the rules may be registered as a multi-state cooperative society. है ना? फिर बोला है the application for registration shall be disposed of by central registrar within the period of 4 months from date of receipt of such application. 4 महीने के अंदर हम आपके एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देंगे. Where central registrar refuses to register the application, he shall communicate the same within the period of 4 months from date of receipt of application for registration. The order of refusal together with reason thereof to the applicants or applicants as a case may be, provided that no order of refusal shall be made unless applicants have been given a reasonable opportunity of being heard. उनको reasonable opportunity of being heard दे दो और फिर आप application को reject कर सकते हो. ठीक है ना? So ये rejection की बात even if you don't write that is okay because हम यहाँ पे application की बात करें. फिर क्या बोला है? The application for registration of multi-state cooperative society shall be disposed of by central registrar within the period of 4 months from date of receipt by him, and if the application for register is not disposed of within the period of 4 months as specified above or central registrar fail to communicate the order of refusal within that period, the application shall deem to have been accepted. मैम अगर रिजेक्शन हुआ ही नहीं, रिजेक्शन कम्युनिकेट नहीं किया या 4 मंथ्स में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया तो उसको हम डीम्ड एक्सेप्टेंस मान के चलेंगे. एंड फाइनली यू विल बी गिवन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा विच शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस. वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा. बस इतना ही आपको लिखना है इस आंसर में. Now let's go to the next question. So your next question is regarding Resilience Asset Reconstruction Company emerged in response to growing crisis of non-performing assets in India by offering innovative solution for asset recovery. How does RARC contribute to improving financial health? In short, they are asking about the functions of asset reconstruction company. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो सी हियर इज द आंसर ऑफ दिस डायरेक्ट क्वेश्चन.
हियर इज द आंसर ऑफ दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बोला है ARC परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. ARC मैम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, rescheduling of debt, enforcing of security interest and settlement of dues payable by the borrower. When the bank grants loans or advances which are involved or are involved in lending, bank has some right or interest in that transaction. When ARC takes such bad debts, all such rights and interests are also transferred. The asset reconstruction company then realize all such right and interest. The financial assistance can be over by asset reconstruction company is loans, advances, bonds, guarantees and other credit facilities. बस इतना ही आपको ARC के मेन फंक्शंस बताने ये वाले आंसर में. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे ये रहा. MNC LLP a consulting firm faced serious allegations of financial misconduct involving a senior partner Kumar who was accused of falsifying financial reports. अब ऐसा बोला है, एम्प्लॉइज फेल्ट अनसेफ रिपोर्टिंग दिस कंसर्न्स इंटरनली अंटिल प्रिया अ जूनियर कंसल्टेंट decided to blow the whistle. She submitted a formal complaint along with the evidence to the whistleblower committee. Citing section 31 subsection 1 of LLP Act which protects the whistleblower from retaliation, what are the protections provided to Priya for reporting misconduct under section 31? यहाँ पे बोला है प्रिया को हम क्या क्या प्रोटेक्शन देंगे अगर वो विसल ब्लो करेगी तो. So what protections we are going to give? So let's see. इसके लिए you have to quote section 31 whistle blowing, है ना, as per LLP Act. तो आप क्या लिखोगे? कोर्ट और ट्रिब्यूनल में reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP if is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during investigation. आपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी. When any information given by partner or employee, whether or not during the investigation आपने दी, but it leads to LLP or any partner or employee of such LLP been convicted under this act or any other act. आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसने कन्विक्शन को लीड कर दिया है ना, बिकॉज ऑफ विच कोई कन्विक्ट हो गया है, तो ऐसा बोला है नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or in any other manner discriminated against the terms and condition of his LLP or employment merely because he is providing information. So मैम प्रिया को हमने क्या दे दिया है, एक्ट में प्रिया को प्रोटेक्शन दे दिया है, बिकॉज प्रिया जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही है जिसकी वजह से कन्विक्शन हो रहा है कोई एम्प्लॉय का या कोई पार्टनर का. सो प्रिया विल बी प्रोटेक्टेड. उसको ना तो डिस्चार्ज किया जाएगा, ना तो डिमोट किया जाएगा, ना तो थ्रेटन किया जाएगा, ना तो सस्पेंड किया जाएगा, ना तो हरास किया जाएगा. सो एज आप देख रहे हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go to the next question. Our next question is Green Tech Innovations is a micro enterprise founded in year 2020 by Raj, an engineering graduate with a passion for renewable energy. Based in a small town, company specializes in manufacturing solar powered lamps aimed at rural areas that lack reliable access to electricity. Raj's vision is to provide affordable, sustainable lighting solutions that improve quality life of its communities. Explain the role of MSME like Green Tech Innovations in economic development and community empowerment. अब यहाँ पे रोल ऑफ MSME डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है, रोल ऑफ MSME. तो मैम MSME का क्या रोल होगा, तो बस यू हैव टू give the introduction that MSME sector has emerged as highly vibrant and dynamic sector of Indian economy over the last 5 decades. MSME not only play crucial role in providing large employment opportunities at a comparatively lower capital cost than large industry, but they also help in industrialization of rural and backward areas and thereby reducing regional imbalances, assuring more equitable distribution of national income and wealth. MSME are complementary to large industries as ancillary units and this sector contribute enormously to the socio-economic development of the country. You just have to write the role of MSME. Very simple, है ना. And now moving next question, which is the last question. Global Tech Solution, prominent software development company headquartered in United States, had successfully established an initial branch office in Bangalore. Following the success of this office, the company has identified the need to establish additional branch office in Hyderabad to further expand its market presence and enhance service delivery.
What are the critical steps and activities involving establishing an additional branch office in India for foreign entities like Global Tech Solutions? So ये Global Tech Solution is not incorporating a new branch office. उसका ऑलरेडी एक इंडिया में ब्रांच ऑफिस है इन बेंगलुरु, उसको एक और एडिशनल ब्रांच ऑफिस सेटअप करनी है इन हैदराबाद. सो यहाँ पे हम एडिशनल ब्रांच ऑफिस सेटअप करने का प्रोसीजर देखेंगे जो कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा है. सो यू आर अप्लाइंग फॉर एडिशनल ब्रांच ऑफिस. आपका पहले से ब्रांच ऑफिस तो था इंडिया में, बट यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर एडिशनल ब्रांच ऑफिस. तो ऐसा बोला है कि ये आप रिक्वेस्ट करोगे फॉर एडिशनल ब्रांच ऑफिस. Request for establishing additional branch office may be submitted to authorized dealer category 1 bank in fresh FNC form. एक fresh FNC form में request submit करोगे. However, documents mentioning form FNC need not to be resubmitted if there are no changes in documents already submitted earlier. जब हमने ब्रांच ऑफिस ओपन किया था ना, फर्स्ट ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु में, तब हमने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे. अगर वही सेम डॉक्यूमेंट्स है तो सबमिट करने की जरूरत नहीं. अगर कोई चेंजेस है देन यू हैव टू सबमिट. If the number of offices exceed 4, that is 1 BO in each zone, that is east, west, north, south. Already आपने अगर 4 ब्रांच ऑफिसेस है and if you have to make और वो भी 4 किधर है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, तो बोले एप्लीकेंट हैज टू जस्टिफाई नीड फॉर एडिशनल ऑफिसेज एंड इट शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI. इस केस में यू नीड अ प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI. हमारे केस में RBI का अप्रूवल नहीं लगेगा फॉर दिस पर्पज. द एप्लीकेंट में आइडेंटिफाई वन ऑफ इट्स ऑफिसेज एज अ नोडल ऑफिस which shall coordinate with activities of all its offices in India. Whenever existing branch office is shifting to another city in India, prior approval from AD category 1 bank is required. However, no such permission is required if branch office is shifted to another place in same city, subject to condition that new address is intimated to designated AD category 1 bank. Changes in postal address may be initiated to CO cell New Delhi by AD1 category bank. सो आप ये वाली चीज़ें वैसे तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आंसर में आप लोग ये भी लिख सकते हो. रिक्वेस्ट फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज इन एडिशन व्हाट इज परमिटेड इनिशियली Annexure C by Reserve Bank of India category 1 bank may be submitted by applicant to Reserve Bank through designated AD1 category bank justifying the need. If you are taking any additional activities, है ना, आपकी नई ब्रांच ऑफिस में आप कोई नई एडिशनल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अप्लाई अलग से करना पड़ेगा. एंड दैट्स इट बच्चों. दिस वाज बेसिकली योर चैप्टर SBI का पेपर क्वेश्चन नंबर 2 है ना. विल कम अप विथ सेम वीडियोस जहाँ पर विल कम अप विथ नेक्स्ट मोर वीडियोस विथ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, और इसी तरह से SBI का पूरा पेपर हम कवर करेंगे. चलो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब करें. विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.